Welcome back to my official YouTube channel. This is Gaurav Ayaan and welcome back to the show. Gaurav Ayaan YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है. चलिए तो आज फैंस इंटरेक्शन हम लोगों ने रखा है, क्रिकेट फैमिली इंटरेक्शन. लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वैसे मैंने ट्विटर पे भी फॉलो मतलब शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर लिंक देख सकते हैं. पर सबसे बेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ वहां पे क्लिक करें, कैमरा और माइक दोनों अलाउ करके बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और हमारे जो गेस्ट हैं क्रिकेट गाय और मिश्रा जी, हम लोग के साथ मिलकर आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसी पे हमारा शो है. आज ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जर्नी रही है न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे. और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम अनाउंस हो चुका है, जो स्क्वाड है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो क्रिकेट गाय मिश्रा जी, शो में स्वागत है. बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरव जी जैसे हमेशा हम जुड़ते हैं, अच्छा लगता है उनका शो और आप सबका प्यार है। और आज मैं चाहता हूं कुछ 10-20 लोग आए, बात करें हमारे साथ। जल्दी से जाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाइए। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग फैंस इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए आज मैंने फिर से रखा है. मैंने वादा किया था कि मैं जल्दी रखूंगा, तो इसीलिए आज हम लोगों ने फिर से रखा है. तो कोशिश जस्ट कीजिए बिफोर WTC। आप लोग आके क्वेश्चन पूछे. मेरे साथ कोई एक जन और जुड़े हैं. ओके, लुकस। फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. हेलो लुकास. Hey, How are you? लुकस। hello guys, how you doing? Absolutely fine, buddy. How are you been? Very good. Tired. It's 1:30 in the morning here, but I'll do this for a while. Excited to do this with you guys. Okay, no issues met. So you can ask questions, cricket guy and Mishra ji, and we all are here. We always debate on the cricket issues, and today's topic is New Zealand journey in World Test Championship final. So how do you look at the New Zealand journey in World Test Championship final? I hope you have followed cricket for I think 1 year for New Zealand. How New Zealand is going in 1 year? So what's your take on that? You look at New Zealand, the way they've played. They've been the informed team for the last 3 to 2 years. They've been almost everybody, they did get cleaned up by Australia in Australia. But they were very strong at home and, dominant against England. You go back to the first test, that they're very unlucky not to get a result, Rain spoiled that evening, that test match, and they probably would have clean sweeped England. In their conditions, they've got bowlers like Southey, Bolt, Jamieson, who's a very good bowler, a player that they've just discovered. And their depth is very good. Henry, De Cologne. So they've got world-class bowling unit which suits English conditions, which also, suits their home ground as well. Their batting is slightly outside of Conway, slightly been poor. Ross Taylor made runs in the last test, but Kane Williamson did really poorly in the first 2 tests against England. So there's a little bit concern over that. But nonetheless, they have been the informed team in the last 2 to 3 years, and they deserve to be the #1 Test nation. Okay, thanks, Lucas, for your take. I think for our viewers, we can share the New Zealand squad for the World Test Championship final. That will be great for the viewers. Okay, I am announcing the team. Devon Conway, Tom Latham, Kane Williamson, Ross Taylor, Henry Nicholas, Will Young, BJ Watling, Tom Blundell, Colin de Grandhomme, Kyle Jamieson, Azaz Patel, Team Saudi, Neil Wagner, Trent Boult, and Matt Henry. So this is the team, guys. What's your take? That's a fantastic side. If I look at the New Zealand side, I've been following them for the last a good 3-4 years, and they have always been in form, and at home especially they have been formidable. It's rarely visiting sides have won in New Zealand, and mostly I guess due to their pace bowlers, the kind of quality attack they have pacers, those who are like, for example, Lockie Ferguson, who is playing for Yorkshire. He's not getting a gig in the test side, and they have phenomenal fast bowlers like Adam Milne, who can definitely play test cricket. So that fast bowling stock is really great. And the new talent, Devon Conway, we need to talk about him, and Will Young. Devon Conway has been a revelation because he has migrated from South Africa to New Zealand, got his
his citizenship, and then qualified for New Zealand. And the first innings he played at Lords, guys, we have seen people. We have seen Sachin Tendulkar, one of the greatest cricketers ever played the game. He has never been. He has never scored 100 in at Lords. He has never got his name on the honours board, and this guy has just flew from New Zealand, and he has been terrific. And another word for Will Young. I guess Lucas must be knowing about Will Young. Actually, Will Young is a very impressive talent. He went to Australia to play, I guess, A matches. He represented New Zealand A, and he also scored runs there. So it has been very good journey for New Zealand, and the way they have played overseas as well. Apart from Australia, yes, when New Zealand got outplayed and they lost heavily in Australia, but definitely if we look at Sri Lanka and also in UAE, even though that is not considered in the WTC, but definitely they have been phenomenal. And in my opinion, they have a very balanced squad. I'm a little surprised they have left out Mitchell Santner, but again, it shows the pedigree of the side. It shows the balance. It shows how much depth they have in New Zealand cricket, and a country of 5.2 million. They have always punched above their weight. Okay, cricket guy, point taken. I think this is the fan interaction question. So we have to take fans' question first. Front Foot has joined us. Front Foot, go ahead. What's your question? Hello guys, good evening. Hello. Go ahead, Front Foot. Hello, my question to you guys is, देखो हमने न्यूजीलैंड की पूरी जर्नी देख ली. Should I speak in English because Lucas is also here? Yeah. Speak in English. Yeah. We saw the journey of New Zealand in whole WTC. What is the weak point do you think New Zealand have? Because we saw they play competitively with total team effort, not depend on one or two guys. They always give team efforts. So what do you think their weakness is? I think the answer will give Lucas. Lucas, go ahead. You want to answer this question? What is the main You problem guys for New answer. Zealand right now? You can answer it. I'll leave that, guys, to you. Sorry? I'll leave that to you. You can answer that. Okay. So Okay. Go ahead, guys. Yeah, the only weakness I find in this New Zealand lineup is a world-class spinner. But they have a spinner who can perform decently. Azaz Patel is a qualified spinner, a seasoned spinner. He is not a youngster who has just burst onto the scene. He's 30 years of age. He has got the numbers that is needed to play in England. So he has been a proven performer playing for his state side. So the only weakness I find is Azaz Patel. And another thing, they have so much players, so much quality that they are it's very difficult to pick the playing 11. That is another Achilles heel for them. I think you guys would agree that that's my point basically. Okay, Well, I think you got the answer. The only problem, I totally agree with the critic guy. The only problem that New Zealand is having, I think they don't have the quality spinner like Ravindra Jadeja and Ravichandra Ashwin India had. Okay, so the only problem that I see in New Zealand right now. Okay, Ratan Kara is asking, lots of love. Nishta ji want to join, but how? Okay, there is a link in description. You can join it. You can click it to join it, and you can ask questions from our guest. I think your question will be from Mishra ji. So you can directly join from description. There will be a link. You can click it and you can join it and you can ask questions. If you are in Twitter also, you can join in. If you are in Twitter. Front Foot, Gaurav, I think Front Foot want to continue with another question. Go ahead, Front Foot. Yeah. Now I want to ask Lucas. Lucas, which series is your favorite? The Ashes or the Border Gavaskar Trophy? As an Australian fan. Again, Lucas, you have been trapped with the same trapped. question that we have been asking you since last 2 days. Yeah, go on. This one is very simple for me. Of course, it's the Ashes. Five test series. You don't get a 5-test series anywhere. The mental pressure, the physical pressure, also pressure emotionally from the press, newspapers, television is everywhere. You cannot escape it.
And Australia, you know, they haven't won it. Australia have not won a Test series in England in 20 years. You know, it's you know, it's that kind of pressure that, you know, it gets to your head. You know, Steve Smith scored 700 runs in that Test series in 2019, and we still couldn't win that series. So, you know, the Indian series is also a big series because India, you know, they drive the TV rights, the money, they have the fan base here in Australia. So that's always going to be a big series, but you know, you just can't beat the Ashes. You know, that's what Test cricket is about. It started with England and Australia. You know, the rivalry. You know, not just of today's players, but past players, Pontings, the Kevin Petersons, the Ian Bothams, the Richie Benos. You know, the Jack Hobbs, the Sir Donald Bradmans. You know, going back to the 40s and 60s. You know, you just can't beat that rivalry. So for me, I'm always going to pick the Ashes over any series in Test match cricket. Yeah, Lucas, where are you based? I just want to ask a question to Lucas. Lucas, where are you from based? Australia. Thank you guys for giving me thank you guys. Keep it up. I am living. Let him answer. Yeah. Thank you, Frankfurt. Bye. Take care. He's from Adelaide, Australia. Yeah, I just wanted to ask Lucas where he based right now. Is he in Sydney or he's in South Australia? No, I'm in Adelaide. Oh, okay. Just one more thing. I did wanted to add something. You know, with New Zealand and what they could do better. You know, we did not mention Neil Wagner once. You know, is that underrated? You know, he has over 200 Test wickets. But exactly. You know, we think of New Zealand. You know, we think of Wagner. Southey and Bolt. We don't really think about Neil Wagner. So also, you know, obviously their weakest is their spinner. You know, they haven't had a decent spinner since Daniel Vettori, who was a world-class player. So, you know, players like that don't come every now and then. So, you know, that was a once-in-a-generation play for New Zealand. So, unfortunately, they haven't really got anyone close to that. You know, they have other options, you know, Satner, Patel. But that's one area that New Zealand would need to improve on. And, you know, one thing in their last 3 to 4 years is that how they played in Australia, they weren't that great. I think that's one thing that they would wish that they would try to do better. But, you know, everywhere else have been very dominant and they deserve credit for it. Okay, I think Mitchell Satner is also not in the squad. It means they have moved on from Mitchell Satner as a Test player. Okay, Azaz Patel. No. I don't think so. I think maybe there is some injury concerns. He got a cut in the recent series, so maybe injury concern. No, he has been dropped from the squad because the Gary State, the coach said that Azaz Patel is our best spinner and we don't want Mitchell second test match was brilliant. That's the main reason also. Yes, of course. Maybe you can say it's a very good point from Gaurav. I even feel that Mitchell Santner's Test career is almost, if not over, but he doesn't even feature in the first playing 11. So that's a setback for his Test career. Yeah, he was not good in Australia, by the way. Exactly. Actually, I think, Lucas, the point you raised about New Zealand spinner, I think it goes down again for the pitches, that the pitches they produce. I guess in Plunket Shield, the pitches don't get tired down, and you can play a fast bowler who can bowl you at least 30 to 40 overs. If you play a spinner, I think the development of spinner after Daniel Vettori retired, I don't think it has been great, and the pitches hasn't helped. If we look at the other spinners that New Zealand have, Rachin Ravindra, they are all bowling all-rounders. They are not proper spinners. So I feel it comes down again for the pitches, and I don't think New Zealand have a spin coach. They have a batting coach, they have a bowling coach, and they don't have a spin coach like England have. Like they have Jitan Patel. So definitely, I think there's a spinner called Michael Repen. He has played for Netherlands. He is born in South Africa. He's also coming up the ranks. So 2 to 3 spinners to watch out for. Yeah, well, you make a good point. You know, New Zealand, you know, their pitches are based for seam bowling. Yeah, you know, which is why they've done well in England. You know, which is why they won that Test series. Absolutely. You know. They have the bowlers to back that up. Now, you know, come Australia where the pitches are more flatter, more harder, you know, you do need that spinner. You do need a penetrating bowler that can penetrate the drop-in pitches in Australia. And that's why Bumrah,
Rabada have been so successful in Australia because they can penetrate that pitch. And that's where the New Zealand bowlers really struggled against Australia because they didn't have a spinner to contain runs, and they didn't have that penetrating bowler. They tried Lockie Ferguson, who got injured, unfortunately. First day. Yeah, He got injured. but Sorry to interrupt you guys. That's why they're the number one reason why they're the number one From Test nation, Ajay because their Jaiswal home was form is saying, brilliant. how can I join? Is Ajay Jaiswal? You can click there and you can directly join from there. Go ahead, guys. But yeah, back to my point, because in New Zealand, because the way their pitches are, they don't need spinners. They can use part timers really. Yeah. Absolutely. And Apart they've done from that Wellington, before, they've dominated. But the problem is, when they got smashed in India. Don't forget, because they didn't have a spinner, and their spinner that they did pick wasn't clearly good enough. I think that's something that they really do need to look at, because unfortunately you can't play all your Test matches at home. And Australia, they play India and Pakistan next year, and they're going to realise very quickly that Nathan Lyon cannot do all the work for them. So that's a concerning thing for teams that get too complacent at home, thinking, well, as long as we're good here, then they go elsewhere and they lose badly. So teams have to take that into consideration. And Gaurav, I think Indian viewers must be thinking about why the pitches aren't turning in New Zealand, why they're not producing spinners. I think Lucas will also agree that because that in New Zealand, most of the stadiums are multi-purpose. The rugby is played and the football is played. So that's why the pitches are not true. Only apart from Wellington, that is based in reserve. Apart from that, the Auckland or Dunedin, they don't have proper pitches. Maybe also in Australia, the same thing is happening. That's why we are seeing a lot of flat tracks in Australia. The AFL is being played, the football and the rugby is being played in Melbourne. So that's why they are also bringing, apart from Adelaide, all the pitches are flat. All the pitches are almost flat. Dropout pitches is also a concern. That's the reason. That's why. That's the reason. Because there are other stadiums and they have to prepare the drop-in pitches, particularly for cricket. There are a lot of other sports played in that particular stadium. Exactly. There's only two true pitches in Australia. Yeah. Brisbane and Sydney. The rest are drop-ins. Okay, Lucas, 2 questions from my side. I have already asked from last 2 days in that Twitter space, but again on live, I want to see your reaction. First question, who do you pick for that World Test Championship Finals? And the second question, what was your reaction after that 2-1 historic loss? Because you're an Australian, so historic he's our loss. guest. You shouldn't be sledging him. We should treat him with grace. He's getting all this question again and again. He's Lucas, you are live, Lucas. Many people are already asking on Australian. Okay, so we won't be taking a lot of time about the Australian point of view. And all the people are asking, please ask him that what is the future of Team Paine captaincy. So go ahead with that also. Well, like I said, I think England have the better bowlers for the pitch, and for the conditions, but I think rain might play a part in that, and it could be a draw. But if I had to pick a winner, I'd pick New Zealand. Remember, they've also played 2 Test matches leading up to this match, and India haven't played any, and that's a very big thing. Both your heart and mind says the same thing. If both your heart and mind are for New Zealand. Yes. Okay. I think if I had to pick a winner, and you are supporting New Zealand. Yeah. I would your like India rivals? I would like India to win, but I think New Zealand are better in those conditions. About Tim Paine, I'm pretty sure this will be Tim Paine's last Ashes series as captain and probably player. I think after the Ashes he will retire as a player and captain. We have 2 good wicket keepers coming up in the ranks in Alex Carey and Josh Ingles. And after Tim Paine goes, Steve Smith will captain. There's no doubt about that, because Cummins has been asked in previous interviews and he's not keen on it. He's not really keen on it. He brushes it off.
And Manus Labuschagne is too young. I think Steve Smith will captain him for 2 to 3 years, and Labuschagne might take over. So that's where I see that with the captaincy of Australia. And I my want to. question, my question, that last I question. slightly disagree with Lucas. I think Marnus Labushkakni is the answer because he, even though he's a youngster, he has the understanding and the way he's playing. I think he's the only player who has been the most improved player. And if you ask Sachin, even Sachin said, I've never seen a talent like Labuschagne. So maybe that's the reason I think Marnus Labushkakni is your answer. Yeah. He's a South African. For me, he's a South African playing for an Australian side. Yeah, we're slowly turning into England. Actually, I better not say that. I might get in trouble. And Lucas, in New Zealand, I was watching, I guess BJ Watling, and then Neil Wagner, Devon Conway, and Colin de Grandhomme, all are Africans. There are 4 South Africans. There are 4 Africans in that side. It seems they want to take it. It seems they want to take over world sport. They got their rugby team and they won the World Cup. So what's stopping them there? Well, they seem to, they can't win it in the Cricket World Cup, so they might as well go somewhere else and try to win it for them as well. Labuschagne, he's risen up the ranks tremendously. He's a world-class player. He played after the Indian series. He went to the Sheffield Shield, made 192 in the final. Against New South Wales. Quality bowling against Hazelwood and Lyon and Stark. Unfortunately, he's gone to England. He has suffered a little bit. He's out of form. He made a couple of low scores. Dear. He has scored 118 runs in three matches, I guess, in the T20 Blast. Darren Stevens got him a couple of times. That's caused a little bit of banter between the Barmy Army and the Australian fans. So it's stuff like that. The Australian are not really keen on putting pressure onto him at that kind of age. So I'm pretty sure Steve Smith will get that captaincy when Tim Payne retires. Okay, Lucas, I think you have not enough time. So final question I want to ask that what will be your 4 pace bowlers from New Zealand? Okay. Obviously, Southey, Jamieson, Wagner, and Bolt. I would pick a spinner in any conditions. I think it just gives a different dynamic. But it seems to me that New Zealand might not go that way. They might pick Colin de Grandhomme or Mark Henry. Mark Henry had a very good Test match. Don't forget. So they might want to stick with him. But if it was me, I would pick the spinner. I'd pick Patel, Wagner, Jamieson, Southey, and Bolt. So you won't be picking any spinner. Will you pick Azaz Patel? Yeah, I'd pick Patel. Yeah. I'd pick it. Yeah, so I would go with 4 seamers and 1 spinner. They have right now in the squad, which has announced recently. Oh, okay then. Oh, so he's not in the squad. Azaz Patel is in the squad. He's the only spinner in the squad. Who? Yeah. I think. Yeah, true. Yeah, they're I would pick him in the final because, like I said, the spinner gives you a different dynamic. But apart from that, the other seam bowlers, you obviously you can't go past Jamieson, Bolt, Wagner, and Southey. So, but I won't be surprised if they didn't pick Patel and they went with Henry for like a 5 pace seamer attack. Considering that. Too much, mate. It wouldn't surprise me, but I think every team has to have a spinner on any surface just to give it a different dynamic. And I think the tail will be also so long that it will be 5 fast bowler, and if you can add Colin de Grandhomme, it will be 6 fast bowler and 1 bowling all rounder from adding Colin de Grandhomme. So that will be too much complicated. I think they will need to go with 3 fast bowler, and 4th fast bowler will be Colin de Grandhomme. He can also swing both ways, and 1 spinner you can add. There is the only spinner they have is Azaz Patel, and that will make more balanced team for New Zealand. So it will be difficult. Who will they draw? Because they have all the quality fast bowler in that team.
So that will be too complicated, and they have a good headache. Okay, that's a good headache the team has, New Zealand has, that who they will pick. Well, also with the Gronholm, he bowls tight. He has a very good economy rate, which Exactly. is underrated in Test match cricket. So he can bowl a lot of overs and not go for many runs. He's a contained bowler. He's probably one of the best contained bowlers in the in cricket, Test match Exactly. level. So that has to be bring into consideration as well. But all their bowlers did nothing. All their bowlers were very good in that series. Even Henry in that last test, the second test match, was very good. So, like I said, Exactly. it's a good problem to have. It isn't a bad thing. It's a very good thing. Exactly. There's not going to be a right answer and there's not going to be a wrong answer. If they pick a spinner and he doesn't do well, okay, in hindsight, you say, well, that didn't work out. Maybe they should win the seamer. If they pick a seamer, you say, oh well, maybe they should win the spinner. It's 2020 vision. But whatever they decide, I'm sure Williamson, the coach, will all have their opinion, and they'll pick whoever's going to be better on that day. A very, very good point Okay. made by Lucas. He said he would pick Colin de Grandhomme. Even I would pick Colin de Grandhomme because I feel Colin de Grandhomme is sort of cricketer. He emulates Andrew Simons because of his power and his dibbly-dobbly military medium pace, and he can definitely make things happen. If you look at that batting lineup, if he is coming in, India would fear. As an Indian, I would fear this guy is crazy. He can change any course of the game by the span of 5 overs or 10 overs. And in the bowling, he just nibbles it in. And Virat Kohli has always faced problem while facing this kind of bowlers. And Colin de Grandhomme even bowled really well when he toured Australia. Lucas, you'd agree if you had seen the test matches closely. He was opening the bowling for New Zealand in the first test, second test, and in the third test, in the Sydney test as well, the New Year's Yeah. Eve. He bowled really well. So I would definitely pick Colin de Grandhomme because of his all-round. And also, you have to put into consideration New Zealand's bowlers can bat. They've probably got the best tail in world Which cricket. that's luxury they have. Exactly. Which England would have. Wagner bats at 11. He's like a number 10. Number 9. He can make 50s. He can make he can be damaging. India might be up 5-4. Sorry, New Zealand might be down 5-4, 150. But those bowlers, they can grind to a 200, 250 target because Jamison, he can bat. Obviously Wagner can bat. He's really not a number 11 Wagner. He's better than a number 11. He can bat at 9 or 8 on a good day. Gaurav, we have got Rupendra here. He can ask some questions to Lucas also. He's sitting. Something. Because I think it is already 2 a.m. in Australia, and he also salute, sleep. Okay, salute to you, Lucas. It's 9:30 here. I am feeling sleepy, but you are awake. I really appreciate your passion for the game. No problem, man. It is 2 a.m. here, so it is late. But like I said to before, I like listening to other people's knowledge. I like giving knowledge about other countries to other people. I think that's what it's about. Trading knowledge, and I really enjoy that. I enjoy other people's opinions, and I hope you enjoy mine. Okay. Final and one request, Lucas, take some time for. Yes, Lucas, it took some time for the World Test Championship final. We will cover on the Gaurav channel or Mishaji's channel. Whole series so that it will be an exciting. I don't have channel. Yeah, we will meet in Twitter always. Yeah, it will don't worry, Lucas. It will Lucas, we can. Yeah. We can meet. Trust me, I'll be watching. I'll be watching, of course. Okay, Lucas, mate. Okay. I think you need to go. It's Test match cricket. How can you not watch Test match cricket? Yeah. Yes, that's true. That's a pure Australian answer. Loves Test cricket, loves the batting. And let me tell you guys, Lucas doesn't watch T20s. He is really upset with T20s, and also he just hates the 100, the format which is coming. So if you want to ask which is his favorite that's IPL really team, disgusting. yeah, if you want to ask which is favorite IPL team, don't ask him. You need to join us when Australia toured to West Indies. You need to be available with us. Okay. Yes, Lucas. Lucas, my favorite team is Adelaide Strikers.
I watch every game. I watch every game, dear. But he is not interested in Big Bash again. That's a T20 league. Yeah, I don't even watch Big Bash. Yeah. Lucas, we have got Saurav Ganguly, the BCCI president, is just joining us. Okay, Lucas, I think it's too much time for you. 2 a.m. you need to go and sleep. Thank you. It was a pleasure talking with you. We all have enjoyed as a mate of yours. Okay. Thanks for the time. I hope you can go and sleep. Thank you for joining in my channel. Hope you have enjoyed Okay, no it. problem, guys. Thank you so much. It was a pleasure to meet all you people and listen to your opinions. Thank you so much. Okay, bye, Lucas. Thank you. We'll See ya. meet you in the future. And Good bye night. and have some sleep. ओके सो लुकास थे ये हमारे ऑस्ट्रेलियन मित्र जो ट्विटर पे हम लोग इनसे काफी बातचीत करते रहते हैं. उन्होंने काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया. हम लोगों ने न्यूजीलैंड के पे ग्लोबल हो रहा है. डिस्कशन किया. आपका चैनल ऑस्ट्रेलियन, यू हैव गॉट ऑस्ट्रेलियन सब्सक्राइबर्स गौरव, तो आपका चैनल गौरव ग्लोबल हो रहा है, गौरव से ग्लोबल. ओके. क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात हुई. उन्होंने काफी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन, सबसे बड़ी बात ये है कि वो ऑस्ट्रेलियन होकर उन्होंने कीवीज पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया. बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है. ठीक है, तो वो क्रिकेट फैन है. एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात. गाइज डोंट फॉरगेट कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गाइज आप लोग मैं एक जन अभी शायद आए थे, वो फिर चले गए. लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज. वहां ज्वाइन कीजिए और तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं. गाइस गो अहेड और लाइक कीजिए प्लीज, बोलिए. और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी तो जरूर दबाएं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए. चलिए गाइस हम लोग अपना जो मेन मुद्दा है उस पे पहले चलते हैं. आई थिंक जो हम लोगों ने देखा है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज, जो कहते हैं कि आप उनका क्या जर्नी रहा है न्यूजीलैंड का. तो आप लोग कैसे देखते हैं 1 साल की जर्नी न्यूजीलैंड को? देखिए रुपेंद्र एक्चुअली न्यूजीलैंड की जर्नी की बात कर रहे हैं. आपका जो शो का मेन टॉपिक है वहां पे कि मोस्ट ऑफ द मैचेस जो न्यूजीलैंड ने खेली है, 1-2 अवे सीरीज के बाद सारे के सारे उन्होंने होम मैचेस खेले, लाइक होम सीरीज खेले. तो वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा था कि भाई आप की जो शेड्यूल्ड सीरीज थी वो तो काफी ज्यादा होम सीरीज थी, तो वहां पे आप तो होम में इनविंसिबल है, तो वहां पे आप तो अच्छा करोगे ही करोगे. तो वहां पे उनका काफी बड़ा क्वेश्चन था कि आप अवे सीरीज क्यों प्लान नहीं कर पाए. उसी वजह से यहाँ पे एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी एक बड़ा सवाल उठ गया था कि भाई ये कैसा एक आपने स्ट्रक्चर बनाया कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे. इधर यानी एक क्लैश ऐसा हो गया था कि भाई आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों ने इतने सारे मैचेस खेल लिए थे और उसी के साथ उसके पॉइंट्स भी कम थे, और न्यूजीलैंड के ने काफी कम मैचेस खेलने के बाद भी पॉइंट्स ज्यादा, मतलब विनिंग परसेंटेज था. उसी के साथ लाइक टाई अप हो सकता था अगर इंडिया वो लास्ट मैच इंग्लैंड के साथ जीतती नहीं, तो शायद ऐसे भी हो सकता था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीते ना, क्योंकि एज हमने अवे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था और होम में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया. तो यहाँ पे वही न्यूजीलैंड ऑब्वियस नो डाउट अगर वो उनका शेड्यूल पहले से होगा, 2-3 साल पहले से शेड्यूल प्लान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी ने यहाँ पे टेक केयर करना चाहिए कि यहाँ पे तो जो सीरीज प्लान हो रही है एज पर कि सभी टीमों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई आप होम और अवे सेम अपॉर्चुनिटी के साथ खेले, कि आपको एक इक्वल चांस मिले सभी टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. तो बाकी उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने होम में. रुपेंद्र सॉरी टू इंटरप्ट यू, कोई जुड़ा है मेरे ख्याल से जिनका नाम है मोहसिन अली. मोहसिन अली जी नमस्ते. कौन नहीं है, वो चले गए शायद. सौरभ गांगुली जी, मोहसिन अली जी आके जा रहे हैं, तो वो मतलब दे शुड जॉइन एंड हैव अ डिस्कशन विद अस. गाइस आप जुड़ रहे हैं, काफी अच्छा डिस्कशन जी. गौरव आपका जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. जी बोलिए. हाँ नहीं आप पूछिए. देखिए तो मेरा ये सवाल था कि न्यूजीलैंड का जो 1 साल का जर्नी रहा है, जैसे कि आई थिंक हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इस पे. जैसे मिश्रा जी से हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, मिश्रा जी का पॉइंट ये है कि ये न्यूजीलैंड हमेशा 2 टेस्ट मैच की सीरीज क्यों खेलता है. ठीक है, मिश्रा जी का ये सवाल हमेशा रहता है. तो इसमें मेरा आप लोगों से ये कहना कि नहीं, मैं उसका आंसर भी जानता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मतलब क्यों ऐसा होता है, मतलब व्हाई डज इट हैपन. ठीक है,
अगर आप देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कभी भी, मैं तो नहीं देखता, अगर बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेलती है तो वो 3 टेस्ट मैच ही खेलती है। ऐसा नहीं जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर इंग्लैंड हो गया, यही 4 या 5 टेस्ट मैच का सीरीज खेलते हैं। न्यूजीलैंड शुरू से ही 2 या 3 टेस्ट मैच से ज्यादा सीरीज वो नहीं खेलते हैं। सो इट्स नथिंग न्यू कि उन्होंने ये चुना है कि 2 टेस्ट मैच खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। इनका बहुत शुरू से ही यही तरीका रहा है। क्रिकेट का हाँ गौरव, देखिए मेरे पहले से मैं बोल रहा हूँ कि जब जब टेस्ट WTC शुरू हुआ था, मेरे पहले से ही माइंड में था कि न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंचेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा है कि अगर आप देखिए न्यूजीलैंड का 2015, 2012, 2010 से वो कभी 2 टेस्ट मैच से ऊपर नहीं खेलते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अगर मैं इंडियन हूं, अगर मैं साउथ अफ्रीकन हूं, या मैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मालिक हूं, तो मैं अगर न्यूजीलैंड को बुलाता हूं तो मेरा कितना व्यूअरशिप आएगा, कितना मतलब न्यूजीलैंड इज अ पॉपुलर टीम, बट न्यूजीलैंड को लोग देखना नहीं चाहते। ये चीज है कि आप बिग 3 में, ये चीज है कि बिग 3 हो गया है क्रिकेट। तो बेसिकली जो बिग 3 के बाहर है उनको लॉस तो फाइनेंशियली तो लॉस है, पर उसके साथ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी टू गेन है जो अच्छी टीम्स है। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में आज भी लिख के दे रहा हूं गौरव, न्यूजीलैंड जितने भी WTC फाइनल अभी फ्यूचर में खेला जाएगा उसमें टॉप 3 या 2 में रहेगी, क्योंकि ICC के पास वो दम नहीं कि न्यूजीलैंड को 3 टेस्ट मैच को दे दे। मैं तो खुद एक बहुत बड़ा एडमायरर हूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट को क्यों नहीं मिलता। सबसे सिर्फ आईसीसी क्यों, आईसीसी नहीं, मेरे ख्याल से वो खुद, उनका जो बोर्ड है वही खुद 2 टेस्ट मैच, उससे ज्यादा नहीं खेलना चाहता, मैक्स 3 टेस्ट मैच, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा गाइस, सॉरी टू एक्चुअली इंटरप्ट गौरव, इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, तो इस पे डिस्कशन काफी अच्छा होगा, क्योंकि समर देसाई जुड़े हैं, समर देसाई जी जुड़ चुके हैं जी। समर देसाई, आप कुछ डिस्कशन चाहते हैं? गाइस एक मैं बात बता दूं, जो भी जुड़ रहे हैं आप लोग, लिंक जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बार बार बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां जाएं, क्लिक करें और क्वेश्चन पूछें। वो समर देसाई, गो अहेड। बट आई डोंट थिंक ये समर्थ है, ये ओके, कोई और है। क्वेश्चन पूछने से मतलब है, जो भी हो क्वेश्चन पूछिए आप, जो भी हो क्वेश्चन आप पूछिए, नहीं तो यू कैन लीव। एग्जैक्टली। मेरा सवाल रुपेंद्र जी से है। जी जी बोलिए। अगर समझो 5 दिन अगर बारिश नहीं गिरती तो क्या न्यूजीलैंड 1 साइडेड हारेगी? जी हाँ बिल्कुल। अगर वेदर फोरकास्ट ऐसा है कि अगर 5 दिन बारिश नहीं गिरेगी तो ऑब्वियस स्पिनर वहाँ पे रोल करेंगे, और क्योंकि आपको पता है कि साउथ हैमिल्टन में स्पिनर्स का काफी बोलबाला रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मोइन अली ने जो इंडिया के साथ किया था, सेम इंडिया के जो स्पिनर, अगर बारिश नहीं भी हुई, पिच कैसा भी हो, तो आपके पास ऐसे क्वालिटी स्पिनर है। इवन तो मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा सेम वेदर रहा तो जडेजा और उसके साथ अश्विन दोनों भी मेरे मैच में रहेंगे, टीम में रहेंगे, और शायद ये 1 साइडेड मैच हो सकता है। ओके, गौरव, रुपेंद्र जी, आप इसके पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं बस वो ऐड कर दूं तो डिस्कशन काफी अच्छा हो जाएगा। अभी कोई ज्वाइन नहीं हो रहे हैं क्या गौरव? सिर्फ हम ही 4 हैं, मतलब नहीं, बाहर से अभी कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं बार बार देख रहा हूँ, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ बुलाने के लिए, क्योंकि हम, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए रुपेंद्र। मैं यहाँ पे पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें 1972 या 78 के बाद से न्यूजीलैंड सिर्फ 2 ही टेस्ट मैचेस का सीरीज कुछ भी खेल रहा है, यानी 90s से 1978 या 72, मुझे कंफर्म ये नहीं पता, लेकिन वो जो एरा था 19 समथिंग का था, तब से नियर अबाउट उसको 20 to 30 ईयर हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये जैसे कि क्रिकेट का बोल रहे थे कि लाइक 2010 या 2000 के बाद से 2 मैचों की सीरीज एक था, लेकिन उस समय भी आईसीसी वो प्ले में नहीं था कि आप कमर्शियल एस्पेक्ट उस समय नहीं था, लेकिन ऑब्वियस वो उनका पता नहीं क्या प्लान था, तो कि तब से यानी 2 मैचों की सीरीज ही खेला था वो, यानी लास्ट टाइम समथिंग 1970 के इसमें वो 4 या 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेला था, उसके बाद से वो सिर्फ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेला। मैं अभी एक मतलब बहुत एक हार्श चीज बोलना चाहता हूँ, जो कि खराब लग सकता है पर वो सही भी है। आईसीसी इज ड्रिवन बाय रवि जी आ चुके हैं। रवि, क्वेश्चन पूछिए, आप क्या, आपका क्या प्रश्न है? शो पे आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, चलेगा। तो बेसिकली चीज है, तो बेसिकली चीज है कि आईसीसी इज ड्रिवन बाय ग्रीड एंड मनी। आप जितना भी बोल लो, ग्रीड है और मनी है, कॉम्पिटेंसी जो है वो वहां से
नीचे चला जाता है। साइड्स लाइक वेस्ट इंडीज, साइड्स लाइक न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सेकंड टीयर बन गए। टॉप 3 बस जो रेवेन्यू दे रहा है उसी को आईसीसी खिला रहा है। ये मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। अगर पहले से उनका एफटीपी प्लान हो रहा है, इंडिया उनको बुला नहीं रहा है, साउथ अफ्रीका बुला नहीं रहे, तो न्यूजीलैंड बोर्ड क्या कर सकता है? घर पे 3 टेस्ट मैच खेल ले, 3 टेस्ट मैच में मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ न्यूजीलैंड 3-0 जीतेगा। आप 5 टेस्ट मैच करो, 5 टेस्ट वो 5-0 जीतेंगे, जो उनका बॉलिंग अटैक है और जो कंडीशन है उनका। मेरा सवाल हाँ, आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे, अगर मान लीजिए बाहर वो जा रहे हैं 2 टेस्ट में, घर में भी तो वो 2 से ज्यादा नहीं खेल पा रहे, क्यों नहीं घर में से ज्यादा सीरीज खेलना चाह रहे? वो कोई जुड़ा है मेरे ख्याल से, 1 सेकंड पहले इनका क्वेश्चन ले लूं। जो भी आप जुड़े हैं शो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो में जुड़े हैं। आप अपना प्रश्न पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? कैमरा भी ऑन कीजिए, आप कैमरा भी ऑन कीजिए, वो अच्छा नहीं, अगर वो कैमरा ऑन नहीं करना चाहते, कोई नहीं, वी रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछें हमारे गेस्ट से। आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं गौरव, अगर आपको प्रश्न कंटिन्यू ये अगर आपको प्रश्न नहीं पूछना है तो आप रहने दीजिए। आप चलिए, क्रिकेट का ही आप, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर वो घर में खेलते हैं तो घर में ज्यादा क्यों नहीं खेलते हैं? 3 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच की सीरीज क्यों नहीं खेलते हैं? ऐसा तो नहीं कि उसमें आईसीसी बोलेगी कि नहीं आपको सिर्फ 3 ही खेलना है या 2 ही खेलना है। आईसीसी पे इसका नहीं, होम सीरीज पे आईसीसी कुछ नहीं बोलती है, ये बोर्ड के बीच में डिसाइड होता है। दो बोर्ड जब खुद नहीं चाहती है कि हम, मान लीजिए फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड से खुद नहीं कोई चाहता कि हम 3 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच का सीरीज खेले, तो ये प्रॉब्लम न्यूजीलैंड का है, ना कि कोई और बोर्ड का है। देखिए गौरव, रीजन क्या है? देखिए गौरव, रीजन क्या है? नंबर 1 स्पोर्ट रग्बी है वहां पे। सेकंड जो स्पोर्ट है, फिर नेटबॉल आता है, फिर क्रिकेट आता है। क्रिकेट वहां पे पॉपुलर नहीं है। तो अगर आप एक मैच करवा रहे हो, उसमें अगर 3-4 लोग आएंगे टेस्ट मैच देखने के लिए, वो टेस्ट मैच का महत्व क्या रहेगा? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पता है कि उनको गेम बढ़ाना है। यू कैन इंक्रीज द गेम बाय T20 एंड वनडे क्रिकेट। टेस्ट मैच उनका जो कल्चर रहता है वो कल्चर है ही नहीं। तो बेसिकली चीज है कि अगर आप किसको ऐड कर रहे हो, फिर बेसिकली उनका कल्चर रहा ही नहीं। तो बेसिकली जब भी 3 टेस्ट मैचेस का बात होता है, वो 1 टेस्ट गिरा देते हैं, 2 T20 ऐड कर देते हैं या 2 वनडे ऐड कर देते हैं। इट इज द ओनली रीजन, क्योंकि वनडे और T20 में उनका बोर्ड को फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ टीवी राइट्स एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड अरेंजमेंट। तो बेसिकली दैट इज द मेन रीजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही मेन रीजन है। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये स्टैटिस्टिकली डेटा ड्रिवन है, ये रिसर्च करके आया हूँ, ये ऐसे नहीं कि मैं सोच के बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये चीज है, दैट इज व्हाई न्यूजीलैंड डजंट प्ले 2 एंड अबव टेस्ट मैच, क्योंकि जो एनजेडसी है, उनके जो डायरेक्टर है, वो पहले भी ये बता दिए हैं कि हमारा जो सिचुएशन है 15-15 मिनट का। तो बेसिकली आपका व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ेगा। तो एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ डायरेक्टर, आप खुद सोचो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप ऑब्वियसली कम जो लंबा टेस्ट मैच, टेस्ट फॉलोइंग वो नहीं है। टेस्ट फॉलोइंग 3 ही कंट्री में लोग देखते हैं, इंडिया में भी बहुत गिर गया है। तो टेस्ट क्रिकेट कोई होस्ट नहीं करना चाहता कोई। मतलब आप देखें दुबई में क्या होता है, या पाकिस्तान में भी। इवन दो पाकिस्तान जब टेस्ट मैच खेल रही थी एट होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कितने लोग आए थे? 50-100 लोग आ रहे थे। तो सब कॉन्टिनेंट का ये हालत है। स्टेडियम में खाली था। एग्जैक्टली, मैच देखने नहीं आ रहे कोलंबो में। तो बेसिकली क्रिकेट का जो व्यूअरशिप है वो डाउन गया है ऑब्वियसली। और स्टेडियम चार्जेस भी आपको उठाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव होता है। न्यूजीलैंड एज अ कंट्री इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे नहीं कि आप मेरे को पता है कि, और एक चीज गौरव, आप बोल रहे हो ऑकलैंड में जो मैच होता है, शायद बहुत करोड़ रुपए न्यूजीलैंड बोर्ड देती है ऑकलैंड को कि मैच होस्ट करे। जब इंडिया आई थी तब लगा कि अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा, इसलिए इंडियन बोर्ड इवन पेड कि ऑकलैंड में जो उनका जो स्टेडियम है, तो वहां पे खेलने के लिए, ईडन पार्क जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये चीज है। Okay, और यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दो क्रिकेट का थोड़ा बस कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो मैचेस होते हैं वो ग्राउंड में एक्चुअली उनका पूरा प्री प्लान होता है कि यहाँ पे रग्बी के मैचेस भी होते रहते हैं। तो ये वो सेम ग्राउंड यानी 2-3 स्पोर्ट्स के लिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप समझ इनकेस अगर एक एग्जांपल दो कि अगर आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज ले रहे हो, तो आपके पास एक तो लिमिटेड ग्राउंड है, लेकिन उनका एक तो एफटीपी पहले से बना रहता है कि भाई हमारे रग्बी के मैचेस होंगे, यहाँ पे दूसरे मैचेस होंगे। तो वो ऐसे बड़े बड़े टूर प्लान नहीं कर सकते न्यूजीलैंड में। तो एक ये भी सच बोलो, इंडिया में कितने लोग आते हैं टेस्ट मैच देखने के लिए? आप खुद बोलो। एज एन इंडिया इज अ लाइक क्रिकेट मैड कंट्री, फिर भी कितने लोग आते हैं? तो वही तो देखिए, इंडिया में क्या होता है, टेस्ट मैच को अभी प्रमोट करने के लिए फ्री में स्कूल के बच्चे को लाया जा रहा है। मतलब अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है जो हो रहा है। अभी नहीं, एक्चुअली ये पहले से ही होता है मिश्रा जी।
क्योंकि वो जब हम स्कूल में थे हम भी काफी बार हम वही स्टेडियम में वही फ्री में ही गए थे। टॉपिक से भटक रहे वही गाइस वही गाइस हम टॉपिक से भटक रहे हैं अभी बिल्कुल न्यूजीलैंड के यार टॉपिक बिल्कुल ओके हम बता गाइस किसी को ऐड करा जाए या ना करे जाए क्योंकि बहुत इशू हो रहा है कोई किस नहीं, हाँ ये इंटेंशन से कौन नो नो ऐड डोंट नहीं ऐड करेंगे, नहीं ये चाहिए। गाइस अभी जो अभी लोग भी मत कर रहे करो, हो ये बहुत ही ये सही क्रिकेट नहीं से है ये। रिलेटेड चैनल है ये यहाँ सब ये सब नहीं इसलिए मैं चलेगा आप उठ लोग तो ये सब चला नहीं करना गया। आपको ये क्वेश्चन क्या ये पूछना मत करिए, पूछो बाद में नहीं बात पूछना करें, मत अपनी पूछो डिस्कशन चालू करें, डिस्कशन शुरू। तो आप कंटिन्यू किसी को ज्वाइन नहीं करे अभी नहीं चाहिए। नो नो देख नो के नो डोंट आज ज्वाइन मत कीजिए, नहीं 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 आज ज्वाइन मत कीजिए, ये बहुत मतलब सही नहीं है ये अरे भाई ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, ये थोड़ी मतलब ये होगा ओके स्पैम में डाल रहने देते देंगे, हैं रिपोर्ट ठीक है कर देंगे ये वीडियो। ओके हाँ, वो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस रहने देते हैं आज के लिए मेरे ख्याल से शो बड़ा हो गया कल मेरे ख्याल से कल भी शो करना कल प्रीव्यू है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आई थिंक हम लोग का शो काफी बड़ा चुका है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं धन्यवाद सबका आने के लिए मेरे शो पे वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं धन्यवाद क्रिकेट गाय मिश्रा जी रुपेंद्र जी आप लोग मेरे शो पे हैं नहीं बहुत अच्छा लगा आज सब्सक्राइब लुकस भी आए लुकस सब्सक्राइब टू को आवर थैंक चैनल। यू और चैनल को प्यार आप दिखाए ढेर हाँ सारा। लुकस को लेके आ सकते हैं, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया मैच आप कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली नो नो Okay, हाँ, ही विल कम एवरीवेयर वो अच्छा वो ओके गाइस सब आप बात करें। चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल मिलते हैं फिर इसी वक्त तब तक के लिए शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि और इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो करें जो कि है आप यहाँ पर इंस्टाग्राम ट्विटर पे मेरा नाम है इट्स गौरव वहां पे दोनों जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तब तक के लिए शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि और अपना ध्यान रखें